Hi everyone, this is AP Singh. I welcome you all on my channel Medico's Maharathi. Hope you all are happy and healthy. My dear friends, today we are going to discuss a mixed bag of questions of biochemistry FMG 2017 to 2020. Okay, so आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? कुछ मिक्स बैग क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं बायोकेमिस्ट्री के, जो कि FMG 2017 से 2020 तक आ चुके हैं. ठीक है. So let's start our discussion. Before starting our discussion, I want to say that if you are new here, then do subscribe to my channel and not forget to press on notification bell icon so that you can't miss any update upcoming in future. Okay, so let's start. Question number 1. All of the following are branch chain amino acid except. Okay, so examiner is asking exception. So what will be exception here? ल्यूसिन क्या है? ब्रांच चेन अमीनो एसिड है. सो ऑप्शन ए इज अ ब्रांच चेन अमीनो एसिड. सो ये तो होगा नहीं. आइसोल्यूसिन क्या है? इट इज आल्सो अ ब्रांच चेन अमीनो एसिड. वैलिन क्या है? इट इज आल्सो अ ब्रांच चेन अमीनो एसिड. So examiner is asking exception. So what is exception here? That is a lysine. Means the option number B will be here correct choice. Okay, so lysine is not a branch chain amino acid. Valine, isoleucine, leucine are branch chain amino acid. Okay, so ये क्वेश्चन है 2017 का and I already discussed all 2017 FMG biochemistry question. Okay, I already made a video. मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने 2017 के FMG के सारे क्वेश्चंस क्या हैं डिस्कस किए हैं. ये क्वेश्चन क्या है रिपीट हुआ था, इसलिए मैंने इसको क्या है दोबारा डिस्कस किया है. व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन? Which of the following help in wound healing? Okay, so you have four options and you have to tell that which option will help in wound healing. Okay, कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो wound healing में हेल्प करेगा? और वो ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, हाइलोयूरोनिक एसिड. ओके, हाइलोयूरोनिक एसिड will helps in wound healing. ओके, हाइलोयूरोनिक एसिड क्या करेगा? वुंड हीलिंग में हेल्प करेगा. ओके, लेट्स मूव टू हाइलोयूरोनिक एसिड क्या है? ये सल्फेटेड नहीं है. ठीक है. इफ here you can see that option number A is also containing a sulfate, option number B is also containing a sulfate, and option number D is also containing a sulfate. Okay, so option number A B D में क्या है? सल्फेट है, इसलिए वो क्या नहीं करेंगे? वुंड हीलिंग में हेल्प नहीं करेंगे. ठीक है. लेकिन हाइलोयूरोनिक एसिड ये है जो है ऑप्शन नंबर सी है, ये क्या है? सल्फेटेड फॉर्म में नहीं है, तो ये क्या करेगा? हेल्प करेगा किसमें? वुंड हीलिंग में. ओके, सो करेक्ट चॉइस क्या होगी? ऑप्शन नंबर सी. व्हाट इज नेक्स्ट? So our next question is use of zinc in diarrhea is because it. Okay, and you have four options. One is reduce the risk of ड्यूरेशन ऑफ एंड सेवर्टी ऑफ डायरियल एपिसोड. ओके, सो ऑप्शन नंबर एक क्या है? रिड्यूस कर रहा है रिस्क को. ठीक है. ऑप्शन नंबर बी क्या है? इनहेंस कर रहा है इम्यून सिस्टम को. ऑप्शन नंबर सी क्या है? रेगुलेट्स कर रहा है इंटेस्टाइनल ट्रांसपोर्ट एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स. एंड ऑप्शन नंबर डी क्या है? ऑल ऑफ अबव. सो व्हाट डू यू थिंक व्हाट विल बी द करेक्ट चॉइस here? My dear friends, the correct choice will be option number D. Okay, it will reduce, it will enhance and it will regulate. Okay, reduce क्या करेगा? रिस्क को, ड्यूरेशन को, और सेवर्टी जो होगी डायरियल एपिसोड की उसको, और इम्यून सिस्टम को क्या करेगा? इनहेंस करेगा. रेगुलेट किसको करेगा? इंटेस्टाइनल ट्रांसपोर्ट एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स. ओके, सो ये तीनों चॉइस क्या है? करेक्ट है. जिंक का यूज अगर हम डायरिया में करते हैं तो ये तीनों चीज क्या होगी? ये जिंक उनको क्या करेगा? मेंटेन करेगा. इसलिए ऑल ऑफ अबव इज अ करेक्ट चॉइस. ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट चॉइस. जिंक जनरली रिक्वायर फॉर प्रोटीन सिंथेसिस. ओके, जिंक की नीड किस किस में पड़ेगी? प्रोटीन सिंथेसिस में पड़ेगी, इम्यून रिस्पॉन्स में पड़ेगी. ठीक है. सेल ग्रोथ और डिफरेंशिएशन में होगी. ठीक है. सो ये चॉइसेस भी अगर ऑप्शन में हो तो उनको हम क्या करेंगे? करेक्ट टिक करेंगे. सेल मेम्ब्रेन का जो ट्रांसपोर्ट फंक्शन होता है उसमें भी क्या है? इसकी नीड होगी. ओके, सो व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन? अरेंज द सीक्वेंस, arrange in the sequence the step of PCR. Okay, so you have to arrange in a sequence the steps of PCR. Below are given steps of PCR and you have to tell that which sequence is correct here. Okay, so you have to tell
which sequence is correct here? So what do you think, what will be the correct sequence of PCR? PCR, it is polymerase chain reaction. Okay, and here are four options and you have to choose one correct choice. Okay, and correct choice will be option number C. So first it will denature DNA. Okay, then it will anneal primers. Okay, and after that in end it will extend DNA. Okay, so first question, that what is this PCR? PCR, it is a polymerase chain reaction. Okay, it is developed by Carey Mullis. Okay, so it is also a question of past year, that who developed term PCR, Carey Mullis. Okay, and what is the sequence of PCR? Then the sequence is here option number C, denaturation of DNA, anneal primers and extension of DNA. Okay, so final one is extended DNA form. So ये क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया. व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन? So our question number 5 is maple syrup urine disease is due to deficiency of which of the below? Okay, so you have to choose one correct choice. Okay, so what deficiency from below option will lead to maple syrup urine disease? Okay, so here the correct choice for this question will be option number A. Okay, alpha keto acid decarboxylase deficiency will lead to maple syrup urine disease. Okay, generally what is a maple syrup urine disease? It is defect in branch chain amino acid metabolism. Okay, maple syrup urine disease क्या है? It is defect in branch chain amino acid metabolism. Now what are branch chain amino acid? Branch chain amino acid are valine, leucine, isoleucine. Okay, and you can say these branch chain amino acid are also essential amino acid. Okay, so branch chain amino acid के मेटाबॉलिज्म में डिफेक्ट होगा तब क्या होगा? मेपल सिरप यूरिन डिजीज. ओके, एंजाइम जो इसके अंदर अफेक्टेड है वो है ऑप्शन नंबर ए, alpha keto acid decarboxylase. It is the enzyme deficient in maple syrup urine disease. What are clinical features of maple syrup urine disease? You can see abnormal muscle tone, coma, okay, mental retardation, and burnt sugar like odor in urine. Okay, so these are clinical feature which can be seen in maple syrup urine disease. Okay, what is next question? So our question number 6 is which of the following is cardioprotective? Okay, examiner given you four option and I tell you one thing, that this question is repeated multiple times. Okay, option number A will be the correct choice for this question. Okay, HDL means high density lipoprotein will be cardioprotective. Okay, ये क्या जो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन है वो क्या है? कार्डियो प्रोटेक्टिव है. इट इज जनरली सिंथेसाइज्ड एंड सिक्रेटेड बाय लीवर सेल्स एंड इट हैज मैक्सिमम फॉस्फोलिपिड्स एंड इट टेक्स cholesterol from periphery to liver. It is also known as a reverse cholesterol transport. Okay, and it converts this cholesterol into cholesterol ester with the help of enzyme lecithin cholesterol acyl transferase. Okay, and it removes cholesterol from extrahepatic tissue. Okay, so it is a function of HDL, high density lipoprotein. So it is a cardioprotective because it removes extra cholesterol. Okay, so this question is also done. What is next question? Next question is which of the following is present in skeleton muscle? Okay, so examiner is asking which of the following is present in skeletal muscle, and you have four options: GLUT4, GLUT5, GLUT7 and GLUT2. Okay, what will be the correct choice? Correct choice will be option number A. Okay, GLUT4 will be present in skeletal muscle. Okay, सो ग्लूट 4 तो प्रेजेंट है स्केलेटन मसल में. ठीक है, सो ऑप्शन नंबर ए तो करेक्ट हो चुका है. ऑप्शन नंबर बी कहाँ प्रेजेंट होता है? ग्लूट 5. ओके, सो ग्लूट 5 इट इज प्रेजेंट इन स्मॉल इंटेस्टाइन, टेस्टिस. ओके, और इसका फंक्शन क्या है? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्रक्टोज ट्रांसपोर्ट. ओके, सो ऑप्शन नंबर बी हो चुका है.
What is GLUT7? Okay, where GLUT7 is present? GLUT7 is present in a liver and endoplasmic reticulum. Okay, and it plays a role in glucose transporter in endoplasmic reticulum. Okay, ग्लूट टू कहाँ प्रेजेंट होता है, इसका फंक्शन क्या है? ग्लूट टू इज प्रेजेंट इन लीवर, पैनक्रियाज एंड इंटेस्टाइन, एंड इट्स फंक्शन इन फॉर्मेशन ऑफ पैनक्रियाज and insulin secretion. Okay, so its function is in insulin secretion. So GLUT4 किस में प्रेजेंट है? स्केलेटन मसल में, और इसका काम क्या है? इट इज इंसुलिन स्टिमुलेटेड ग्लूकोज update after meals. Okay, so its function is updating glucose after taking meals. Okay, so option number A correct choice है. Question number 7 complete हो चुका है. What is next question? Melanin is derived from which amino acid? Okay, melanin is derived from which amino acid? You have four options. Okay, and you have to choose one correct choice. Correct choice will be option number B, tyrosine. Okay, so melanin is derived from tyrosine. This question is repeated multiple times. Okay, from 2017 to 2020, approximately 3 times this question is repeated. So melanin is synthesized or derived from tyrosine. Okay, and it follows a pathway. Okay, so generally tyrosine is breakdown to dopa by tyrosinase enzyme, and it further forms melanin. Okay, melanin, it is a pigmentation. Generally you can see melanin is responsible for pigmentation. It is a pigment present in skin. Okay, what is our next question? What is our next question? Question number. So our question number 9 is enzyme deficiency in Tay-Sachs disease. Okay, so Tay-Sachs disease में कौन सा enzyme deficient होगा? Okay, so the enzyme deficient in Tay-Sachs disease is option number C, hexosaminidase A will be deficient in Tay-Sachs disease. Okay, so option number C क्या है? Correct choice है. What, I think it is a very popular enzyme, glucocerebrosidase. Okay, glucocerebrosidase, it is an enzyme deficient in Gaucher's disease. Okay, so I already told about Gaucher's disease in one of my short video, that Gaucher's disease generally shows us crumpled tissue paper appearance, and enzyme which is deficient in Gaucher's disease is beta glucocerebrosidase. ओके, बीटा. और अब ऑप्शन नंबर सी क्या है? वो तो है टे सेक्स डिजीज के लिए. ठीक है, ऑप्शन नंबर जो डी है उसमें से हेक्सोसेमिनिडेज बी, आई नॉट टॉक अबाउट ए, ओनली बी, इट इज डेफिशिएंट इन disorder that is Sandhoff disease. Okay, in Sandhoff disease hexosaminidase B will be deficient. Okay, and it is a enzyme which is deficient in Sandhoff disease. So option number B भी हो गया, C भी हो गया, D भी हो गया. ठीक है, so इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट चॉइस कौन सी है? ऑप्शन नंबर C. What is next question? So our question number 10, it is our last question. Increased amount of phytate in wheat will lead to deficiency of which of the following? Okay, so the correct choice for this question will be option number B, that is iron. Okay, it will lead to deficiency of iron. Okay, if phytate will increase in wheat, then it will lead to deficiency of iron. Generally, phytate plays a negative role in iron absorption from intestine. Okay, and hence there will be increase of phytate in wheat, and it will lead to deficiency of iron. Okay, so my dear friends, it's our end of this session regarding discussion of mixed bag questions of biochemistry FMG 2017 to 2020. Okay, if you feel that this video is helpful, then you can like this video, you can press on share button, and you can subscribe to my channel for more updates. Okay, so thanks to everyone, stay safe, stay healthy.